Hello and welcome to my YouTube channel Apex English Language. Myself Sanjeev Sharma. Today I am going to teach you active passive in present continuous. We have already discussed present indefinite in our previous video. Now we are going to discuss present continuous. But how will you identify present continuous? I will tell you. Right? I will tell you what is present continuous. Present continuous in Hindi. You will find here रहा है, रही है, रहे हैं. Right? Now, if you are converting it into passive voice, so after helping verb, these are helping verbs. After helping verbs, you will use being, right? But before that, I am going to tell you some common rules. Although we have discussed all common rules in our previous video, but again, we can discuss common rule for every tense, right? And these are three rules. Number one, subject becomes object. Subject becomes object and object becomes subject. Object becomes subject. Right? And important rule, that is third one, we use V third. V third is used, you can write in this way also. V third is used. It means verb की third form का use किया जाता है. And apart from these three rules, इनके अलावा only in present continuous we will use being. Is it clear? Being with is, are, इनमें से कोई एक use करेंगे and after that being. Now we will discuss some examples over here. Active, he is teaching them. So you must know what is subject here and what is object, because we have to follow these rules also. I mean subject becomes object and object becomes subject. So if you know what is subject, I think he is subject here and them object. So them को आप starting में they बना के, I mean इसका subject बनाओगे, after that you will put in the beginning. इसको शुरू में रखेंगे. They are being, according to rule, they are being taught. This is third form, by him. तो he जो पहले subject था, now it has become object और he का object him होता है. Right? So they are being taught by him. वे उनके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं. Active, he is solving questions. वह क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या फिर क्वेश्चंस उसके द्वारा सॉल्व किए जा रहे हैं. तो क्वेश्चंस ये ज़्यादा हो जाते हैं तो आर आएगा. अभी पहले इज था बिकॉज ऑफ ही. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, नाउ इट इज प्लूरल. क्वेश्चंस आर बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम. राइट? तो क्वेश्चंस उसके द्वारा सॉल्व किए जा रहे हैं. राइट? दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ दैट सेंटेंस. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज. Some more examples we have written over here, and that is active. Mohan is repairing watch. Mohan watch repair कर रहा है. तो watch is being repaired by Mohan. Now this is helping verb and ये subject के according आते हैं. Subject फिर से हमारा singular, तो is पहले था, is अभी रहेगा, and being after that V third and by Mohan. तो मोहन का ऑब्जेक्ट भी मोहन ही रहेगा. ओके. नेक्स्ट वन, आर यू क्लीनिंग यूटेंसिल्स. क्या आप बर्तन साफ कर रहे हो? दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो आर का जो हम आर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जब यूटेंसिल ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन के आया तो इट इज़ प्लूरल, अगेन प्लूरल. सो प्लूरल के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आर यूज़ करते हैं. आर यूटेंसिल्स बीइंग क्लीन बाय यू. तो यू एक सब्जेक्ट था पहले और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, सम मोर एग्जांपल्स वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. हु इज डिलीवरिंग लेक्चर बिफोर ह्यूज क्राउड. भारी भीड़ के सामने कौन भाषण दे रहा है? तो हु एक सब्जेक्ट है और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा बाय हुम. बाय हुम इज लेक्चर बीइंग डिलीवर्ड बिफोर ह्यूज क्राउड. लेक्चर किसके द्वारा भारी भीड़ के सामने दिया जा रहा है. Okay. Now next example, active, is he washing the clothes. क्या वह कपड़े धो रहा है? बट आर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. वाई वी आर यूजिंग आर? बिकॉज
क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स हमने पहले जो ऑब्जेक्ट था उसका हमने सब्जेक्ट बनाया, एंड नाउ दिस इज प्लूरल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आर द क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड बाय हिम. After that, according to rules, we have to use V third and being also. This is very important. In case of continuous, you have to use being. So now this is all about present continuous. We have discussed so many examples. Now I think it's clear for you all. If you just want to convert some sentences from active to passive, now you will have to follow some rules which we have discussed in this video. So take help, take some read some rules, take some tricks from this video and try to convert all the sentences which are in your mind from active to passive. So if you like this video, please hit the like button and share this video as much as possible, right? That's all. Thank you for watching.